in performance, whereas at higher distances, a slight increase in power has more pronounced effects. Can anybody answer this? इस क्वेश्चन को बनाया था ग्राफ देखकर. अगर आप लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट का ग्राफ देखोगे, उसमें आपने ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे मैंने इनपुट पावर बढ़ाई थी लोअर लेंथ में 40 किलोमीटर्स पे, सो इनपुट पावर मैंने 0 रखी या 5 dBm रखी या 10 dBm रखी, तो देयर वाज नो इंक्रीज इन परफॉर्मेंस. वेरेज हायर वेरेज आपके हायर लेंथ में जब डिस्टेंसेस बढ़ी, तो उस केस में थोड़ी सी भी पावर इंक्रीज हुआ तो प्रोमिनेंट इफेक्ट उसमें नजर आया. उसका रीजन क्या है? उसका कोई लॉजिकल टेक्निकल रीजन नहीं, लॉजिकल रीजन है. छोटी लेंथ पे ना कोई लॉसेस होते हैं ज्यादा, एक 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे डिस्टेंस से फर्क तो है. At lower length there is not much of losses, so whether you increase any power, it doesn't make much of a difference. There is no increase in performance, whereas as you go higher, even a slight increase in power shows a prominent effect in the total performance at the output. Okay, and then experiment number 4. See, are you guys following it, please? I will be discussing only till experiment number 5. Rest 4 हम बाद में करेंगे, क्योंकि आपको भी सिर्फ 5 ही लिखना है. ठीक है? कौन ज्वाइन कर रहा है अभी? Already very late, Nidhi. Joining so late. Okay, experiment number 4. 4 में है define span in an optical link. Span is usually a combination of a fiber along with an amplifier, but otherwise span signifies a module which has to be repeated in a link. So that comprises a span in an optical link. How is DSF different from SMF? DSF stands for dispersion shifted fiber, whereas SMF is single mode fiber. The length of DSF is usually lesser than SMF. Effective area का आपको मैंने टेबल दिया था, अगर आप लोगों ने फाइल्स में लिखा होगा. So effective area is also different for both the cases. I don't recall, but as such I remember DSF had the effective area of 55. If anybody can correct me. Anybody remembers? SMF had, yeah, it had 55, and SMF had probably 84, 84, 80, yeah, 80, yeah, right. So effective area ho gaya, and the dispersion. SMF ki dispersion is 16 picosecond per nanometer per kilometer, whereas DSF has theoretically zero dispersion, but practically we take very nominal -2 या -5. All right. Okay, what happens when 250 kilometers of SMF is used instead of DSF? इसका भी आंसर आपके ग्राफ से लिया गया है. 250 kilometers of SMF results in a cumulative dispersion of 16 into 5, which is a huge amount. And because of this huge dispersion, the output received has a highly reduced performance indicated by a very low value of bit error rate. Bit error rate की वैल्यू आपको दिख जाएगी ग्राफ से जो मैं आपको भेजा था. अगर आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, पूरे जो कंटेंट का मैंने दिखाया था उसमें bit error rate of DSF after 5 spans of transmission and of SMF after 5 spans of transmission is mentioned. So you can, as a comparison, write that. Mention the wavelength at which we have minimum dispersion, 1550, minimum attenuation, 1550. Okay, minimum dispersion is actually 1300, but you can write DSF mein this is brought to 1550. So ideally 1550 is a ideal wavelength for minimum dispersion and minimum attenuation. What type of material is used at itna range and itna range? Okay, 800 से 900 nanometer range में usually silicon use किया जाता है, and 1100 से 1600 nanometer range में I think it is indium gallium INGAAS. Let me see. Yes, indium gallium arsenide. इंडियम गैलियम आर्सेनाइड एलॉय होता है जो कि मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट योर
different components में जो doping की जाती हैं, so the material is apt to be used in the composition of photodetectors. So I repeat, it is silicon for 800 to 900, and it is indium gallium arsenide for 1100 to 1600 nanometer. Experiment number 5, discuss iteration loop feature in opticism. So you can write iteration loop featured as an opticism is used. Anybody can tell me what is the reason? Yes, anybody? All right, iteration loop is used for the cases of longer link designs where a particular length has to be repeated, the span has to be repeated. So instead of using the multiple spans one after the other to reduce the complexity of the design, we use a span which is a fiber and a amplifier combo, and it is being the span is put in the iteration loop module of opticism, and the number of times the span has to be repeated is given by the number of times the iteration loop repeats. So it reduces the design look for the systems designed in opticism, right? Okay. What comprises the total attenuation in fibers? Of course, there are many features apart from the attenuation जो हम बोलते हैं 0.2 dB per kilometer. You have the attenuation. You can Google it as well to get a broader picture. But few points are attenuation, the 0.2 dB per kilometer, attenuation of various components used, attenuation at the points where the fibers are spliced or joined. Coupling losses जो हम कहते हैं ना, coupling, that is again a kind of attenuation. So coupling जहाँ fibers को join किया जाता है, जहाँ fibers को splice किया जाता है, जहाँ source और fiber को join किया जाता है, क्योंकि सोर्स और फाइबर को तो हम ज्वाइन करेंगे ना, तभी आपका वो एक्सेप्टेंस एंगल और वो सब न्यूमेरिकल अपर्चर पिक्चर में आता है. सो वो सब फीचर्स, वो सब चीजें आपकी एटेन्यूएशन को ऐड करते हैं. ठीक है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एटेन्यूएशन ऑन द रिसीव पावर? ये आपके ग्राफ से लिया गया था क्वेश्चन, व्हिच इज क्वाइट ऑब्वियस. आप एटेन्यूएशन जैसे बढ़ाएंगे, रिसीव पावर reduces, but at a particular after a particular level of attenuation it becomes stagnant, because no further reduction is because already power itni minimal ho chuki hoti hai, so it doesn't make a difference whether it falls down more. So that is why if you remember, the graph is reducing and then it becomes constant after a while. All right. Okay, and इसमें क्या था? Difference in performance of link designed by use of 5 spans of 50-kilometer fiber with EDFA and without EDFA. Again, quite a simple one. आप EDFA लगाओगे तो देखिए, वैसे तो हम SMF यूज कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस और डिस्पर्शन के कारण वैसे ही खराब होनी है, लेकिन अगर आप एम्पलीफायर लगा लेते हो तो इट विल बी बेटर एज कंपेयर टू द वन विदाउट एन एम्पलीफायर. All right. So for this, you can code the numerical value for your first and the third experiment. First experiment it was without the amplifier, and in the third experiment it was with the amplifier, but it was only for one span, not the 5 spans. So you can mention कि one span में अगर इतना है तो 5 spans में और ज्यादा होगा, but EDFA के साथ वो better होगा. ठीक है. And optical splitter की क्या usage है? Last question. Splitter is a passive component. It is a passive component. It is not an active component. एक passive component होता है splitter, जो कि design का part होता है, so that it does not disrupt the normal transmission of the signal. And your splitter लगाने से the signal can also be simultaneously visualized in an optical scope. So hence you would have seen a triangular shape icon or a module where the input signal is given and the output is shown to be a signal going forward, and a dotted line shows where your scope is attached. So the first 5 experiments, 5 questions each. I hope it is clear. So please, we discussed 25 questions now. Discuss
Google, if you would have listened to what I said, then please do your files properly and submit it by this Friday. And again, to reiterate, tomorrow's lab, do not miss. जिसको जिसको मैं क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी वो उसी वक्त जा सकता है या जा सकती है, अगर उसको कोई और काम है तो। लेकिन मिस करना और नहीं आना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज अगर मैंने ये एक बार ही लिया, मैं दोबारा नहीं लूंगी। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। Anybody has any doubt? Are you all okay with it? Suvikram, Mohit, Inyan? Okay. मैम हाँ. जो भी आप वाइवा लोगे Mm-hmm. कल, Mm-hmm. दैट वुड बी related only, or that can be asked from the syllabus as well. मैं तो ट्राई यही करूंगी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछूं मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का वाइवा है, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो इसी के अराउंड ही होगा, यही होगा, इसी के अराउंड होगा। ये क्वेश्चंस देने का मेरा आपको मकसद ही यही है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या होते हैं। बड़ी नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं ये। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि आप लोगों के पास वो जो ऑप्टिकल की जो सेटअप है आप लोगों का, वो मैं अपने स्क्रीन पे शेयर करूंगी। सो वो लैब के जो सेटअप्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो लैब की वाइवा है, थ्योरी का तो वाइवा है नहीं। इसलिए तो ये तभी मैंने क्वेश्चंस आपसे शेयर किए थे, तो ये टिपिकल लैब के क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है? एक एक दो दो क्वेश्चन पर बच्चा पर प्रैक्टिकल होगा। पहले 3 वाइंड अप करेंगे हम। तो पहले 3 प्रैक्टिकल्स होगा, फिर नेक्स्ट 3, और आखिरी के 2, नहीं 3 3 6 और आखिरी के 4, ऐसे करके आई विल टेक, ताकि नवंबर तक हमारा ये वाइवा शावा सब खत्म हो जाए, दिसंबर ऑनवर्ड्स आप लोग फ्री हो। ठीक है? तो हमारे पास कोई हेडेक नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 था, रीजन आउट द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पावर मीटर रीडिंग्स। So input power meter is placed before the transmission, and it shows obviously a higher power that was given by as an output of a laser source, and output power meter reading is placed after the transmission, and it shows much reduced readings. इसकी readings की value आप result से उठा सकते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद इनपुट हमारी 2 या 5 dBm थी, और ट्रांसमिशन के बाद दिस पावर वाज रिड्यूस्ड टू -8। So you can see, you can tell the difference of the readings at the input and output power meter readings shows a drastic decrease after the transmission, and that is because of the inherent losses which a signal which a signal experiences while transmission. You can just mention that losses के कारण ही आपकी power meter readings reduce हुई है ना? You can mention that. All right. And the fourth question, performance criteria for a design optical system. Answer is the optical system is a digital system, and hence the performance criteria is based upon analysis of the digital eye diagrams, and along with it the bit error rate and the Q factor calculations. That's it. ठीक है? कुछ और? हाँ, anything else? भुवन, निधि, जो बाकी बच्चे अभी लेट आए हैं। सुविक्रम, क्लियर? तानिया, प्राची, पार्शव, आप लोग हो वहां पे, बस ऐसे आए हुए हो? अनम्यूट योरसेल्फ। सुविक्रम, Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. ओके, Yes, तानिया आ ma'am. गया, प्राची भी आ गया, और मयंक, आर यू देयर? मोहित, Yes, ma'am. ओके, मोहित इज देयर, भुवन, Yes, ma'am. ओके, भुवन भी है। चलो ठीक है, फिर आप लोग अपना कैरी ऑन करो, एंड बी देयर ऑन टाइम टुमारो। ओके, ऑल राइट, यू मे लीव देन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।